and welcome, boys, to the first podcast of our new channel 90 plus 3. How are you feeling today, guys? I'm Hi feeling great. guys. Hi everyone, I'm feeling great, especially because of Ronaldo's return, as everybody knows. Ayush, Yeah. you are the Viva closest one to him. Ronaldo. This is our joyous this occasion is Ronaldo coming back and me being there, watching everything, the crowd and everything roaring and everything. This feels really good. Yeah. So let's explain the viewers what we are going to do in the podcast every week. Suyash, if you would like to, मतलब हम क्या करने वाले हैं, how are we going to plan it, and कैसे we going to section the videos and everything. Every week we're going to meet on Sundays. We're going to record, and we're going to record about the top 6 teams, what teams they face, and how their week has went. And that will go on for around 20-25 minutes. We plan for 18-20 minutes, and then the second thing would be an upset discussion or a chakma discussion, as we like to call it. That will explain any of the fixtures that have upset the audience, or maybe that is not gone, that does not fit into the norm. The Basically people were chakma. expecting to get. Yeah, upset. Yes. ये दो फॉर्मेट रहने वाला है. Basically, in the last section, we'll cover. Correct. Exactly. We'll cover the rest of the teams and see if they've done anything well. So Exactly. let's start with तुम्हारी team. Ronaldo returns to United. क्या माहौल? Let's talk about the match itself directly. क्या कैसा लगा? क्या था? How it panned out? Because I have a question. मतलब I am happy for you guys 4-1 GK and all that. So we can talk about Pogba, Bruno. ये सब तो सब लोग ने सबको पता है, सबने अच्छा खेला, ये वो रोनाल्डो ने लोगों मारा. मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है, they had that goal not gone before the first half. Like it was going to end 45 plus 2 में था, and it was basically one of the last kick of that half. अगर वो goal नहीं जाता, तो would you guys still would have won 4-1? So anybody can like go for first, Suyash or Ayush, जिसको जाना है. I'm just putting it out there. I'll go. मेरे को लगता है कि हाँ, फिर भी 4-1 जाता ही. बट फर्स्ट हाफ में वो गोल जाने से सब ऑडियंस थोड़ी और हाइप हो गई, क्योंकि लोग ने पहले से एक्सपेक्ट किया था कि वो हैट्रिक मारेगा तो ब्रेस मारेगा. सब जगह पे तू, इफ यू वुड हैव गॉन एंड चेक ट्विटर और इंस्टाग्राम, एवरीबडी वाज प्रेडिक्टिंग अ ब्रेस. मे बी पीपल वुड हैव नॉट प्रेडिक्टेड अ ब्रेस अगर फर्स्ट हाफ के पहले गोल नहीं जाता, मतलब फर्स्ट हाफ में गोल नहीं जाता तो. बट 4-1 कंफर्म ही था, मतलब ये पकड़ के ही चल रहे थे. मतलब हाई स्कोर लाइन 4-0 तो कंफर्म ही था. रोनाल्डो का ब्रेस में भी अगर वो पहले नहीं मारता ना, तो लोग इतने कॉन्फिडेंट फील नहीं करते. उसका पहले मारने के बाद फिर तो सब लोग कॉन्फिडेंट थे कि भाई हैट्रिक मार देगा, ऐसा सीन था. Because that goal not only helped Ronaldo because he didn't have a particularly a great half because इतने chances नहीं थे and he couldn't get into the game, but it helped him obviously to get back in the second half and do what he does. He's been doing since 15 years. But the team also, because they tried a lot in the first half but नहीं खुल रहा था, and just मौका मिला खुला, and second half तो फिर मतलब जो जोश में आए वो तो फिर आयुष. मेरे ख्याल से I second to what I will agree to what Suyash says, because we have always, last year we saw we are second half FC. Plus against low blocks, I think it takes time to open up them because they are defensively very solid and organized. And अगर मैचेस भी देखोगे तो सारे अटैक्स भी हम लोग के ऐसे ही टूट रहे थे बिकॉज विंग प्ले नहीं हो रहा था, सब सेंटर में आ रहा था. वो 8 लोग उनका डिफेंस से पूरा लाइन अप कर दे रहे थे. इसलिए वो एक गोल जो था दैट हेल्प्ड अस ओपन अप मोर, बिकॉज ये लो ब्लॉक वाली टीम से फिर खुलना चालू करती है बिकॉज दे नीड टू कम बैक इनटू द गेम. इसीलिए फर्स्ट हाफ में एक गोल मिलना बहुत जरूरी था. बट अगेन आई आल्सो प्रेडिक्टेड, सो यूनाइटेड की ऐप में आई प्रेडिक्टेड 4-0. एक गोल उन्होंने मार दिया, वो भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट 4 तो पढ़ने ही थे. And honestly, yes, आयुष एकदम सही पॉइंट बोल रहा है, because I have noticed that too, and Twitter पे आजकल बहुत टॉक है कि ओले की टीम से वाइब टीम है, they don't really have a tactic or a way of playing. And I agree कि they don't have a way of playing, but that is intended. They don't want to have a way of playing or a tactic of playing. जैसे ट्यूशल करता है, his players know exactly at what moment to be on what positions and do exactly what. ओले ने फ्री रखा है उस चीज को, and वो intentional है. He wants to encourage players taking on players. He wants to encourage free flowing football with players. तो वो intentional है. और मैं भी जो कोचिंग लाइसेंसिंग करता हूँ ना, तो मेरे ट्यूटर्स और सारे मेंटर्स बोलते हैं कि the best coaches are the ones who don't have to coach. मतलब वो सिर्फ जाके उस जगह पे खड़े होकर पॉजिटिविटी भी देंगे ना, तो टीम को मालूम होना चाहिए एग्जैक्टली वो लोग क्या करना चाहते हैं.
That's what basically staff Sir Alex Ferguson used to do. Agreed. But I'm saying अच्छा था performance and everything. Ronaldo now, the main question is how are you going to use him? Because we saw him centrally start किया, but eventually his best moments or his best bits in the game came in when he was left से थोड़ा, when he comes in, when he gets the space and he can play off a player rather than a central point is what I feel. What that will be fluid, yes, because he will start as striker, but Ole does not have fixed position. मतलब he does not put that pressure on players to stick to your position all the time. अपन पहले भी देख चुके, Greenwood also stays fluid. If Greenwood is playing striker, Martial or Rashford is playing left wing, right wing पे समझ Sancho है, James है, they're always fluid, they always run around and take each other's position. तो अभी भी true रहने वाला है. But Ronaldo will start at striker every game, every Premier League game at least. And Rashford will be back to left wing, Sancho right wing होगा. Greenwood को occasionally थोड़ा सा वो रोल दे देंगे कि developing still. 19 साल का तो थोड़ा ऐसे दे सकते हो उसको. I'll add to what Suyash is saying. और अगर मैचेस भी देखेगा ना तो फ्रंट थ्री हमारे रोमिंग ही है. They don't take one position. बस ये है कि उसमें क्या होगा, कुछ का अपना जैसे अपना स्टाइल या अपना लाइकिंग है. जैसे Ronaldo won't drift to the right much. He will drift to left more. Sancho can switch balls. Greenwood drifts to the right more rather than being central. तो ये जो फ्लोइंग था वो रोनाल्डो जब आ गया, अभी तो रोनाल्डो करेगा एक चीज, बाकी फ्री फ्लोइंग होगा, बट ही विल प्ले वेयर ही वांट, इज व्हाट आई एम सेइंग. He will play because he is going to give us goals. Yeah, exactly. I am not denying that. Yeah. थोड़ा सा yes, what you're saying is वो टारगेट मैन वाला तू बोल रहा है ना कि रोनाल्डो विल स्टे देयर. वो रोनाल्डो के दिमाग में है, दैट विल हेल्प अस, क्योंकि टारगेट मैन वी हैव बीन लैकिंग समटाइम्स. जो फर्स्ट टैपिंग गोल मारा उसने, वो कोई नहीं मारता. वो कवानी भी बहुत हसल करता है, बट पोजीशनिंग रोनाल्डो का भी थोड़ा बेटर लगता है मुझे कवानी से भी. तो वो टैपिंग गोल ना कोई मारने को है भी नहीं यहाँ पे. और कवानी सीखेगा, सॉरी रैशफोर्ड एंड ग्रीनवुड सीखेंगे वो सब चीज रोनाल्डो से. तो टारगेट मैन होना जरूरी है, बट ओले वो नहीं डालेगा इंस्ट्रक्शन, यू हैव टू बी अ टारगेट मैन. रोनाल्डो के दिमाग में वो रहेगा बिकॉज़ ही वांट्स टू स्कोर गोल. ही विल बी द टारगेट मैन. He will give Ronaldo a complete forward type of role. कोचर भी रहेगा, टारगेट मैन भी रहेगा, वो 200 लाख टीम प्लेयर्स को बीच में भी लाएगा. ओले नहीं भी देगा तो बोलेगा तो मैं कर लूंगा, वो बोलेगा मैं करता हूं, बोल ले ये क्या करना है, मैं अपना कर लूंगा. एंड पॉग्बा मेरे हिसाब से ही वाज द मैन ऑफ द मैच. और यू गाइस मेरे हिसाब से कैसे इसके बारे में ही थोड़ा अंडररेटेड गया उसका परफॉर्मेंस, बिकॉज़ ऑब्वियसली रोनाल्डो ने गोल मारा, ब्रूनो स्कोर्ड अ स्क्रीमर एंड एवरीथिंग. बट जो बंदे ने इम्प्रूवमेंट लाया है लास्ट 1.5 years में उसके गेम में, टू fit in the role which is not used to and do things from there. मतलब ability wise and quality wise we always knew के पॉग्बा में है ये, but to adapt and अभी ये सिस्टम में मतलब एक enforcer जो बन रहा है ब्रूनो के साथ, वो वही है. But Pogba ना unleashed है, but that is also because there are other stars and attention is on Sancho, it's on Ronaldo, it's on Varane. अटेंशन इतना डिवाइडेड है ना, nobody is expecting big, मतलब not expecting मतलब कोई आके मुंह पे पॉग्बा को बोलने जाके पॉग्बा से परफॉर्म नहीं करेगा ना तो पूरी पब्लिक तेरे को वेरी गुड पॉइंट. एंड वो प्रेशर कौन भी नहीं करेगा, जैसे बहुत बार होता था. वो प्रेशर उस पे वापस भी आ जाएगा ना, तो वो फिर से सेम प्रॉब्लम होने लग जाएगी. आई एम श्योर अबाउट इट. पॉग्बा को ऐसे क्यों डालना है तुम लोग को, बाकी लोग पे फोकस करो, पॉग्बा अपना काम करेगा आराम से. एंड दैट्स I'll add to what Suyash is saying. There are two very good problems that we have. One, we have stars और सबके साथ प्रॉब्लम्स है डिफेंडर. कोई भी ऐसा परफॉर्मेंस के लिए पॉग्बा या ब्रूनो को टारगेट नहीं करेगा बिकॉज वी हैव stars and we have attackers to perform. The limelight is divided. A very good point. Second point, Pogba is unleashed only when we have a proper CDM around him. Matic is the only proper CDM in our team who can allow Pogba to play freely. वो passes break करता है. वो अगर तुम देखोगे तो वो पीछे भी डिफेंस में वो 3-man डिफेंस हो जाता है जब मैटिच पीछे आ जाता है. तभी शॉ को आगे जाने का मौका मिलता है, तभी पॉग्बा आगे जाता है. So these are very two important points we have. बट ऐसा चीजें कंटिन्यू होना चाहिए, which I am consistent होना चाहिए. कि ओले will keep a positive attitude amongst the squad. हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स नहीं होने वाला यहाँ पे. I am sure about it. क्योंकि ओले इतना मतलब malleable, flexible आदमी है कि कर लेता है. Because he in his post match conference he said it, okay, इतना अच्छा atmosphere and it could have been an anti climax, but the boys did well. They came in right into the game and सब कई टाइम पे सही हो गया. Let's talk about your other rivals now. Chelsea, they are looking very strong. Lukaku, तुम्हारा प्लेयर जो तुम्हारे टीम में फर्स्ट टच नहीं ले पा रहा था, यहाँ पे टच लेता था और 4 मीटर दूर बॉल लगता था. This completely changed. He's gone to Italy, evolved his game.
He's basically morphed into a like very complete striker, if I may put it in a way. Yeah, And Tuchel, the way he set up his team and the way they play, it suits Lukaku as well. So उनका भी बताओ. They had a tough game in a way. Aston Villa is not like no, you can't just walk over them. Yeah, you can't, but you kind of can this season because Aston Villa, I predicted earlier in the season कि क्योंकि you can only peak so much as a team that's मतलब you know that's underperforming मतलब नहीं that's overperforming. You can only peak as much. वो last season उन लोग का peak हो गया. And now there's eyes on them. But उन्होंने Grealish कुछ बेचा हुआ है. उन्होंने अच्छे signings किए हैं. They've replaced it. और अभी वो लोग ना if they get the same points as last year, people will still be unsatisfied कि Aston Villa ने अच्छा perform नहीं किया क्योंकि वो लोग का peak हो चुका है last year. तो थोड़ा सा एक psychological वो भी होता है. Second चीज, Lukaku is a complete player. He has become a complete player himself. He fits in Tuchel's system, so it's like love relationship. And United fans also don't feel bad for him because he's always conducted himself in a very professional manner. वो छोड़ के भी गया तो उसने कुछ shit talk नहीं किया कि यूनाइटेड की कोई गलती थी या कुछ ये था. उसने बहुत प्रोफेशनली और बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है उसका. I want him to shine. मतलब even though he plays for Chelsea, I don't like Chelsea, but he will shine, and I want him to shine because Lukaku individually is a very good person and he's a good player. He deserves all the good things that there for him, and he'll not stay at Chelsea for a long time. I'm very sure about it. Nobody stays at Chelsea for a very long time. So कर लो एक तो manager भी अभी Tuchel like you never know, 3 months down the line he might be there or not. But jokes aside, बहुत अच्छा खिला रहा है बंदा. Ayush, you were saying something. I was going to add to what Suyash was saying, that Lukaku is a good person. इसीलिए everybody wants, even कोई भी United fan जो रहेगा ना, everybody will want him to succeed. They will know nobody hating Lukaku like we hate Di Maria. That is the difference between being a good person and being a snake. Plus Tuchel के पास अभी difference. The recent interview which he gave, उसमें उसने बोला that उसका problem लुई वैन हाल के साथ था और इतना बढ़ गया था problem कि he had to leave. It's not because उसने he एक और didn't बोला like था the statement कि I didn't give a fuck about this number 7 jersey. Number 7 at that point, yeah. I say fuck off to him. Okay. Fuck he off. Said, yeah, I'm out of context लिया थोड़ा दिल पे लगा, मैं समझ रहा हूँ. But मैं तेरे को एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसका व्यू पॉइंट वो टाइम पे, क्योंकि वो बोला मैनेजर मैं कुछ भी करूँ, he was sticking up on me. So I didn't give a care about the number because things were going wrong, and that's why he wanted to leave. Not like वो बोला Manchester United तो गाली कोच के गया. स्टेटमेंट क्या मैटर करता है क्योंकि he has already burned his bridges. नहीं करता. It doesn't matter. We hate him. Simple. अपने को डी मारिया नहीं पसंद, टेवेज नहीं पसंद, और they have bought that upon themselves. वो लोग ने ऐसी चीजें बोली है. Exactly. As fans अपना रिस्पांसिबिलिटी ये नहीं कि हेट करे लव करे. जो छोड़ के जाता है we have a good feeling. जेम्स भी गया, मैं तो बहुत disappointed था to be honest when Dan James left because he had a मतलब he's not the most technical person. He's a good person. Yeah, he had a good role. चला गया. He's a good person. I will say he's a good person. And why Suyash likes him, I will appreciate also that because he is a very hardworking player. But I didn't like him as a player in my team when I am growing up. Yeah, okay. कोई बात नहीं उसमें. और मैं तो I believe जितने भी लोग स्क्वाड में फिल जोन्स भी अपन हेट नहीं करने का because अपना फिल जोन्स तो लेजेंड है भाई पूरा जितना प्यार है मस्तर करो and please love your team और सपोर्ट करने का. बाकी पब्लिक जो भी है डिफेंड करने का अपने प्लेयर्स को. सिंपल है. कोई भी कुछ भी है फिल जोन्स very good message, very nice message to how to support. अच्छा था वो. And coming to Tuchel, what difference between last year and this year is they have good finisher now. Werner की तरह वो chances miss नहीं करेंगे. So Chelsea is more lethal than last year, I feel. First thing was that Tuchel, which would have noticed last year ही हम जब बात कर रहे थे कि Werner क्या मैं कैसे replacement लाऊं, and they did, which was the right thing to do. Now let's talk about City because they also had a very tough game. Leicester, even after the game, if you see the City players and the manager, so उन्होंने बोला Leicester is not an easy game. We like हमें लगता है कि Leicester, but it's not easy to get past them. और 1-0 जीता, scrappy win and all that. But yeah, they also got 3 points. उनके बारे में कुछ. I really feel कि City का इस सीजन they are missing a spark somehow. मतलब मैं कोई भी मैचेस देखता हूँ उन्होंने 5-0 भी दिया. उधर फरान टोरेस अच्छा खेला, बट कभी-कभी मुझे लगता है कि सिटी ना वो एक स्पार्क मिस कर रहा है जो आई थिंक वो अग्वेरो या फिर कोई स्ट्राइकर जो आउट एंड आउट स्ट्राइकर ला सकता था. तो दैट इज व्हाई दे वर बिहाइंड केन कि उनको वो चाहिए, बट एक स्पार्क वो मिसिंग है सिटी के. और वो बहुत I'll make things simple for you guys. सिटी टाइटल जीता है, वो ये साल नहीं जीतेगा. मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ क्योंकि
इतने साल इतना years of experience अपन देखा है, प्रीमियर लीग टाइटल डिफेंड करना next to impossible, it will Not be easy, impossible. तो सिटी से भी मुझे कोई थ्रेट फील नहीं होता, even though they gonna run, if they win 10 matches in a row, I'll not feel a threat because I know they will drop off, they'll not be a contender, they'll not be in the race. I think top 4 finish करेंगे. The only contender would be Chelsea, but I'm not going back to Chelsea. I'm just saying सिटी से और वो स्पार्क जो तू बोल रहा है ना, their excuses have already been set. Even if they don't perform that well, वो लोग बोलेंगे कि स्ट्राइकर में अपने को केन चाहिए था, रोनाल्डो आने वाला था, we lack the striker, their excuses are set. अगर वो लोग फेल भी करते हैं तो पेप का जॉब भी सेफ रहेगा. And but last season भी नहीं था striker, but they still somehow managed to win it. Bro, they were still struggling. Squad deck management exactly. They perform must एकदम, but they'll not be in the contention to Premier League title. वो तो I'm sure about it. Leicester वाला गेम पे आते हैं तो अच्छा ठीक है, आयुष go ahead. और मे बी स्पार्क वाइज आई थिंक केडीबी भी नहीं आया अभी, तो हो सकता है कि वो स्पार्क वहां फील हो जाए, तो केडीबी की एब्सेंस भी है अभी. That also and I don't हाँ वो प्लस अभी मेरे को तो ये था कि अभी ठीक है सर सिटी तो we will have to see much more of them. Still early, It's just started. It's been 3 very early. I wanted to talk about Liverpool because for me they are going very like under the radar because कोई उनके बारे में कुछ बात नहीं कर रहा है, किसी को उनसे कुछ मतलब सकता है बट ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि चैलेंज कर सकते. बट in my eyes, like of what I've seen, I know it's early. I think they can put in like a challenge because under the radar जा रहे हैं, इतना expectation नहीं है and वही उनका भी थोड़ा फ्रंट लाइन का थोड़ा केमिस्ट्री जो बोलते ना जो था पहला 2-3 साल वो कम हो गया, बट I think they are also in with a shout. Yeah, it's impressive and Klopp का भी it's very impressive because I told you guys कि I'm expecting like if मतलब Klopp का ऐसा टाइम आता है पीक करता है अच्छे से, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन करता है, इवेंचुअली इतना गंदा डिक्लाइन करता है कि he's like around the 15th or 18th spot in the league and then he gets sacked. But Klopp ने individually बहुत ज़्यादा सीखा है and even staying in the mix of the top 4 equation, even ये challenge की बात भी चल रही है ना, that's a very good positive. Very good. He's sustained. He's evolved and वो score जो maturity पे लेके आया ना, that he knows that he'll be able to challenge because now he's got a like a bunch of players जो almost सब peak पे ही है अपने. और वो लोग उसने squad rebuild हम लोग देख बाकी टीम्स ना, United was in a rebuilding phase, they were in a rebuilding phase like since 3 years. अभी तो बोल सकता है कि near completion है. क्लॉप का वो रिबिल्डिंग फेज हो गया, उसने वैन डाइक खरीदा, उसने प्लेयर्स खरीदे अच्छे, अभी थियागो भी अभी उसको एक या दो पोजीशन पे कभी कभी उसको कुछ ट्वीक करना है ना तो खरीद सकता है और उसको सपोर्ट भी है, बैकिंग है बोर्ड का. तो लिवरपूल लेकिन कोई कप्स में लुक आउट फॉर लिवरपूल टू बी ऑनेस्ट, कोई कप्स में दे डोंट डू वेल. बट आयुष लिवरपूल क्या मतलब आई विल टेल यू व्हाई दे आर गोइंग अंडर द रेडार, बिकॉज थोड़ा सा मैं सुयश से डिसएग्री करूंगा बिकॉज सिंस अभी हम लोग देखा है ट्रांसफर फ्रेंजी पूरा इतना सब ट्रांसफर हुआ, लिवरपूल को इतना कुछ खास ट्रांसफर सीजन नहीं गया है एंड एफएसजी आई एम नॉट श्योर इफ दे सपोर्टेड देम वेल इन टर्म्स ऑफ मिडफील्डर्स. फिर अंडर द रेडार क्यों जा रहा है, क्योंकि आई थिंक अटैकर्स भी उनसे इतना थ्रेट नहीं लग रहे जितना साला के अलावा उतना कोई थ्रेट लग नहीं रहा है, बट स्टिल दे आर एबल टू मैनेज द जॉब वेल विच इज बिकॉज ऑफ क्लॉप. उन्होंने एलियट को अच्छा खिलाया था, अनफॉर्चुनेट इंजरी हो गई उसको, but Elliot ने उसने fill कर रखा था, तो Klopp in a way is promoting good youth players as well. So in terms of the managerial career, he is doing very well. But under the radar इसीलिए because इनका कुछ ट्रांसफर इसमें इस सीजन कुछ इतने बड़े कुछ हुआ नहीं है, उनकी मिडफील्ड पोजीशन अभी भी थोड़ा मुझे डाइसी लगती है. ट्रांसफर का सिर्फ एक काउंटर करूंगा, जो मैंने रिबिल्ड बोला ना, लिवरपूल का स्क्वाड रिबिल्ड हो चुका था, तो उन लोग को दे डोंट नीड टू गो एंड कंपेयर देमसेल्व्स टू टीम्स लाइक सिटी एंड चेल्सी बिकॉज City and Chelsea will always be teams that will be overspending. They'll be buying in positions that they don't really need. Exactly. So, and Liverpool, the way they do business is very different. It's different. Chelsea, City and FSG का जो model है मुझे तो बहुत पसंद है. How they do business and how they plan the things, and they don't need to go overboard. कि मतलब सब कर रहे तो हम करेंगे. Which is what Klopp pointed out, and I retweeted that also on our page. That he feels that it's sufficient enough. We have the squad. We needed 1 or 2 players. We bought Konate. So it's not that if everybody is spending, we feel the need to spend, which was a very valid point. I think it is good. It is good. I'll tell you why I'm saying कि वहाँ पे थोड़ा सा एक lacking है because Wijnaldum and Shaqiri both left and both are good squad players to have. तो वो squad players एक replace नहीं हुए, इसकी वजह से वो youth लेके आए. Curtis Jones है, Harvey Elliott था, unfortunately आज हो गया, वो Curtis Jones आएगा. They have a lot of academy products. Adapted Campbell in his back.
चेम्बरलिन इज बैक फ्रॉम द इंजरी, वो भी यूज होगा अभी। और तो यार मतलब है एफएसजी एंड क्लॉप का रिलेशनशिप अच्छा है। आई एम श्योर क्लॉप भी डिमांड नहीं कर रहा है एफएसजी से कि मुझे और प्लेयर्स चाहिए थे, तुम लोगों ने खरीदे नहीं, और एफएसजी भी क्लॉप को जाके बोल रहा है कि एग्जैक्टली तू डिमांड करनी है पर प्लेयर्स नहीं कर रहा है तो फिर तू डाउन हो जा। एग्जैक्टली रिलेशनशिप अच्छा है, कुछ टॉक्सिक वॉक्सिक नहीं है, इट्स बस सीन ये वेरी इन सिंक है थोड़ा लिवरपूल। सीन ये और है कि फर्स्ट आने लायक नहीं लग रहा है बस। क्योंकि नहीं क्योंकि लग रहा, बट स्क्वाड आई फील दे स्क्वाड कैन डेप्थ चैलेंज एक जस्ट बिकॉज दे आर गोइंग अंडर द रेडर। मेरा वो पॉइंट था कि कोई किसी का ध्यान नहीं है, ज्यादा प्रेशर नहीं है, तो शायद मतलब चकमे में चकमा ऑफ द सीजन लिवरपूल ना निकल जाए अपना सेक्शन जैसे। प्रोबेबली स्क्वाड डेप्थ भी एक मुझे लगता है कि अगर तुम बाकी टीम्स का देखोगे तो स्क्वाड डेप्थ लिवरपूल का मुझे थोड़ा वीक लग रहा है, दैट इज व्हाई अंडर द रडार और जा रहे हैं, आई बट दे आर सपोर्ट यू डूइंग द अदर, क्या बिजनेस वेल, करेक्ट दे आर डूइंग द बिजनेस है। वेल, और टॉप 3 टीम्स 10 पॉइंट्स सेम जीडी में लिवरपूल भी है। एग्जैक्टली अभी कोई That's what नेगेटिव I'm होने के saying. लिए ना, And नेगेटिविटी ढूंढने के लिए कुछ पॉइंट नहीं है। कोई लिवरपूल फैन है ना जो मुझे अभी पाता है I was about to come to that. I was about to come to that कोई negativity that क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि देख अभी Arsenal के was लिए good. they have been performing well, they have been sustaining themselves, they have a good squad, everything is positive as of right now, there's no need to get negative। कुछ प्रॉब्लम I am expecting थोड़ा बहुत होगा उनका प्रॉब्लम, थोड़ा मुझे भी लग रहा है, but थोड़ा as बहुत of now बदलाव आएंगे सब। हाँ, Hmm. बोल Let's because you mentioned negativity. So वैसे मुझे आना ही था उस पे। अभी now as we are calling it the top, so we've spoken about the 4 clubs. Now Arsenal and Spurs will combine them. दोनों का एक साथ ही बात करते हैं। नेगेटिविटी पे आ नेगेटिविटी जाए। 3 वीक था नेगेटिविटी। दिस वीक दे गॉट ऑफ 1-0 विन, ओबामयांग ने चलो बचा लिया। And it's the reverse for Spurs because they started well, but Nuno, they got 1-0 wins under Nuno and red card ho gaya, and this week they slipped and all. So let's talk about one by one about Arsenal, then Spurs. Arsenal का क्या है मतलब I Can think I go they're the first? biggest spenders in this window, and लग नहीं रहा है कुछ में स्पेंड किया है। एंड क्या मतलब होप एंड प्रे, मतलब पता नहीं क्या आर्सेनल के लिए क्या करना है बताओ। तो आई डोंट नो बिकॉज ऑफ व्हाट आई फील फॉर आर्सेनल, मतलब वो लोग बहुत भले लोग रखते हैं, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है टाइम से, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा हो उनके साथ। तो आई वाज वेरी हैप्पी, और ये एक चीज 2 पॉइंट का क्या था कि बेन वाइट के आने से और नॉर्विच का सामने भी इजी टीम थी, तो आई एम हैप्पी कि वो एक 1-0 विन भी उन्होंने निकाला, तो मेरे लिए वो अच्छा है, ताकि उनका क्या है कि बहुत सारे नए प्लेयर्स उन्होंने इंटीग्रेट भी करें, वो लोकोंगा भी थोड़ा फिट होगा, उसको थोड़ा पॉजिटिविटी आएगी, एंड विंस कैन डू दैट टू यू। हाँ, also I do not believe that Arteta is like a really bad manager. I think he's learning, सीख रहा है बंदा बहुत, और at the same Arteta time is basically where Ole started off, to be honest. अभी I mean right now similar है, but Ole का थोड़ा I can't say easier, yes. Ole picked it really easily and gracefully, और उसने बहुत बात किया स्टार्टिंग में, तो डिफरेंट है थोड़ा सा। Arteta का सीन ये कि he's even trying the hardest, मतलब he's taking up the hardest challenge, which is वो ज्यादा हेल्प मांग भी नहीं रहा है, मिल नहीं रहा, उसको पता नहीं, बट वो सबसे यंगेस्ट प्लेयर्स को भी खिलाने की कोशिश कर रहा है। एट द सेम टाइम उसको पता है जॉब पे थोड़ा प्रेशर है, फिर भी वो यंगेस्ट प्लेयर्स ही इज स्टिकिंग टू व्हाट ही वांटेड टू डू, व्हिच मेक्स मी थिंक कि इवेंचुअली वो लाइट आने वाला है आर्सेनल के लिए। ही इज सॉलिड एट द बैक। थोड़ा नेगेटिविटी भी है, इट्स अ टफ जॉब एज वेल, प्लस थोड़े अभी इन दिस सीजन व्हेन वी टॉक अबाउट दिस काफी इंजरीज भी आए हैं, सो ही हैड टू अडैप्ट अ लॉट। और पार्टे भी फिट नहीं, अगर मैं बोल रहा हूँ पार्टे 38 में से 30 मैचेस फिट हो गया ना इनके लिए ये सीजन, आधा सीजन उनका ऐसे ही भला हो जाएगा, बट वो इट हैज टू गो देयर वे आल्सो नो। एंड द गुड पार्ट इज कि आर्सेनल बोर्ड इज आल्सो सपोर्टिंग आर्टेटा, वो लोग अभी तक भी उन्होंने सैक का कहीं पे डाला नहीं है, वो सब फैंस और ट्विटर सैक कर रहा है, बट बोर्ड ने अभी तक कहीं प्रेशर आर्टेटा पे नहीं डाला। बहुत इंप्रेसिव है वो, बहुत इंप्रेसिव है। सैक वाला जो होता है कॉल अपना, जैसे लास्ट सीजन चला था, ये दिसंबर जनवरी में पता चल जाएगा कौन होगा सबसे पहला। पर मेरे को अभी भी आई हैव नॉट गिवन अप ऑन आर्टेटा, द बोर्ड आई डोंट थिंक हैज गिवन अप ऑन आर्टेटा। फैंस भी आर्सेनल के बहुत गुस्से में, डिप्रेस्ड है, जो भी है, दे हैव, वो लोग के पास भी थोड़ा सा क्लेम करते हैं वो लोग होप पे, क्योंकि आर्टेटा सॉलिड है यार अभी भी, ही हैज बीन प्लेइंग यंगस्टर्स, जो पॉजिटिव साइन है, अभी भी सॉलिड रहता है एट द बैक, दे हैव अ वे ऑफ प्लेइंग टू। इट्स जस्ट दैट कि यार कभी कभी सिटी को फेस करते हैं तो ओवरवेलमिंगली अच्छी टीम्स रहती है यार, वो लोग से तो हारना ही है, और फिर 1-0 हारने के बाद यंगस्टर का क्या टेंडेंसी होता है, उसके बाद वो लोग गिव अप, पेडल पे से कुछ निकल जाता है, फिर 3-0 4-0 लाना इजी है, बट आई थिंक देयर इज होप। अभी उनका फिक्सचर रन भी बहुत, टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंस, फिक्सचर रन भी बहुत इजी है उन लोगों का, कम से कम 8-10 ग्रीन काफी अच्छा, मतलब दे कैन गो ऑन अ गुड रन एंड दे कैन ब्रिंग द, मतलब पूरा क्लब जो भी डाउन थोड़ा चल रहा है नेगेटिविटी उसको पॉजिटिविटी में ला सकते हैं डेफिनेटली, एंड दे विल डू इट, आई एम श्योर। स्पीकिंग ऑफ व्हिच के हमें
स्पर्स और नूनो सर के बारे में बात करना है. So the first 3 games very good, unbeaten and everything. This game थोड़ा red card spoiled the plans because to be honest देखो red card के बाद ही game बदला है. तो it's not like कि हम एकदम ही मतलब कि तो स्पर्स है तो होना ही था ऐसा. I know Ayush wants to do that. Yeah, I want to say something. So, see, I appreciate Nuno. He's a good person again, and his defensive solidarity and moving the team as a whole is good. But he is again controversial, and it will be very against to what you guys think. It is he is in terms of his playing style, in terms of just his playing style, he's no different to Mourinho. So they have just what they have done from last season is an upgrade to the mentality. That's it. और स्पर्स बहुत अच्छी टीम है उसके लिए एंड नूनो बहुत पॉजिटिव मतलब टीम का स्पिरिट बहुत पॉजिटिव रखता है. उसका ना टॉक्सिक होने नहीं वाला. उसके प्लेयर्स दे विल कीप फाइटिंग फॉर हिम एंड दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस आई कैन पॉइंट आउट बिटवीन मोरिनो एंड नूनो. मोरिनो का दिमाग खराब होता है, वो टीम को छोड़ देगा, ओनर्स को छोड़ देगा, क्लब को छोड़ देगा. मेरे को वो निकल चुका है. He starts picking up on players, on पता नहीं लोग, मेडिकल स्टाफ, प्लेयर्स. अरे ये मोटा है, इसको खेलने नहीं आता, इसको क्रॉस नहीं आता, इसको मेरे दिमाग नहीं आता. शॉप को पूरा मेंटली मतलब बंदे को छोड़ने के कगार पे लेके आ गया था कि भाई तेरे से कुछ नहीं होगा. That is true. That is true. Mourinho is like one of those people जो छोटी छोटी चीजों पे भी ना पॉइंट आउट करेगा. वो तुमने छींका नहीं सही से, तुमने खाया नहीं, आज तू वहां पे पैर फैलाए खड़ा था. Which is the only problem with him is. But not bringing the topic to Mourinho. Nuno, चलो comparison side में रखते हैं. I do not agree with it. I can understand why people can make comparison between Nuno and Mourinho. I don't agree with it. Similar playing style. Right. I can understand why they're making, but Nuno का बहुत अलग style है, and I really believe कि Nuno बहुत अच्छा करने वाला है Spurs में. In fact, top 4 को बहुत tough fight देने वाला है. Spurs बहुत tough fight देने वाला है. So you are saying Spurs top 4 नहीं तो 5th ऐसा कुछ finish करेगी? 4th नहीं तो 5th तो करना ही है. उसके नीचे नहीं. Honestly बोल रहा हूँ. मैं Nuno को देखा है और Nuno यूरोपा तो आ जाएगी. हाँ, because इसके नीचे नहीं. मेरे को नहीं लगता. लेस्टर, आर्सेनल, स्पर्स और वेस्ट हैम के बीच में the 2 other spots they'll fight for it. These 4 clubs amongst themselves will fight for the 2 spots beyond the top 4 which we discussed. Bro, I think they'll Spurs. I'm not sure about Arsenal, Leicester. वो लोग नहीं देंगे fight. I can imagine, but Spurs will give a fight for the top 4 and they'll just end up finishing 5th or something. ऐसा हो सकता है. But Nuno bro बहुत I'm expecting very big things out of him. Not in terms of 8-0 होने वाला है, 10-0 होने वाला है तो Spurs बहुत रन पे जाने वाली है. But वो लोग का solidarity होने वाला है और उनके players मरने वाले हैं. डेले वेले सब लोग साइन करने वाले. पॉजिटिव. बट ना सीन सिर्फ ये 1-0 विंस के साथ ना इतना टाइट रहता है ना, एक रेड कार्ड कैन चेंज द कोर्स ऑफ योर गेम. वो सीन अगर तू भी वो फिलॉसफी अडॉप्ट करेगा ना, फ्यूल कोच योर टीम ना, तो वन इतना टाइट होता है ना गेम जीतने के लिए, और थोड़ा सा भी हिल जाए ना उसके बाद तो 3-0 4-0 आना बहुत इजी है. एवरीथिंग चेंजेस, द होल स्ट्रक्चर ऑफ योर टीम ओनली चेंजेस. That is why there is an old football concept also, right, that you need to kill the opposite team. तो 1-0 इसलिए डाइसी रह जाता है, because 1-0 में you are always, there is this always risk. भले जितना भी सॉलिड हो, एक भी अगर मटका भी गया ना तो तुम्हारा पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है. इसीलिए ऑपोजिशन किल करना बहुत जरूरी है. With 11 players he knows how to take the risk and how to play. With 11 players he knows. But वही अगर रेड कार्ड एंड ऑल तो सिचुएशन चलो आउट ऑफ ये आ गया तो सिचुएशन बात ही अलग हो जाती है. और पैलेस को थोड़ा सा क्रेडिट दे देते, लास्ट एक में 10 सेकंड बोलना था, पैलेस को थोड़ा सा क्रेडिट दे देते बिकॉज़ रेड कार्ड के पहले भी वो लोग अच्छा खेल रहे थे. मेरे को वियरा पर थोड़ा डाउट हो रहा था कि वियरा, मुझे लग रहा था कि वन ऑफ दोस मैनेजर्स है, वो लोगों ने कुछ रिस्क लिया और गैम्बल नहीं पे ऑफ करने वाले. You had a big name. हां, बट वो भी वियरा करवा रहा है तो अच्छा लग रहा है मेरे को भी देख के. बस प्लस वो पैट्रिक वियरा सेड आई डोंट लूज टू स्पर्स, so he is being true to Arsenal. yeah. तो एंड एडवर्ड का डेब्यू we have to like put light on that. थोड़े से गोल्स ना थोड़े भलते थे बट he was राइट पोजीशन. उसने क्या 3 टच में 2 टच में गोल मारा था यार, मतलब उसका नसीब भी अच्छा था. हां, as long as कोच एडवर्ड को थोड़ा देना पड़ेगा सर्विस. Let's say this game was only the chakma of the week for this week. I think so. As per the rankings. Yeah, that was the chakma. Yes. सब एकदम नॉर्मल था. साउथहैम्पटन 0-0 हुआ था, साउथहैम्पटन वेस्ट हैम ना, मे बी 0-0. हां, 0-0. ब्रेंटफोर्ड ब्राइटन 1-0. ब्राइटन 1-0. हां, ब्राइटन 1-0 टॉस. 1-0. बाकी तो नॉर्मल था. Wolves had a good game 2-0 because Wolves has a good game. Because they were playing very well till now, but they were not able to score the goals, and they signed a striker one. He also scored. So another debut scorer. Because,
Everton Burnley left. Everton Burnley. I think Everton will win it They again. yet to play around. हाँ, Burnley still look like a weekend Burnley. Everton का now with Everton a lot depends on how Calvert-Lewin's injury plays out because हर week बोल रहे injured है पर खेल रहा है फिर पता नहीं अभी क्या होगा. प्लस उनका डेमराई ग्रे भी वन ऑफ के पीछे मतलब कैल्वर्ट के पीछे बहुत अच्छा खेल रहा है. He is one of the players who will shine this season. एंड लेस्टर आई थिंक जब वो लेस्टर छोड़ के गया था तो आई थॉट ही मतलब लेस्टर के लिए लॉस था वो एक तरीके से बिकॉज वो एक ही सीजन बायर लेवरकूसन गया और वापस इधर ही आ गया एंड ही इज अ गुड प्लेयर. डेमराई ग्रे in terms of Everton अच्छा परफॉर्म करेगा in terms of FPL also will be a good buy. हाँ, ग्रे एंड ईसा मिलर सार दोनों आई थिंक दे गोना शाइन दिस सीजन और 5.5 और 6 है दोनों. बट सीन क्या है पता है 5.5 to 7.5 के रेंज में बहुत सारे मिडफील्डर्स काफी ऐसे बजिंग very tricky bracket. जोटा पेरेंट और अडामा ट्रोरे डेमराई ग्रे फिर कार बोल दिया ट्रिंका फिर भी इतना गैम्बल नहीं लेंगे बट ये 5-6 नहीं मैं मजाक कर रहा था. ट्राओरे भी गोल नहीं देगा यार. ट्राओरे आउटपुट उसका थोड़ा कम है यार. एफपीएल के टर्म्स में आउटपुट कम है पिच के टर्म्स में तो ही इज लीथल. मैं होता तो मैं डरता ट्राओरे भागता मेरी तरफ तो फिर सांड भाग रहा है मेरी तरफ. देख ब्रो स्टैट्स का सीन क्या है ना ट्राओरे इतने अच्छे पोजीशंस में जा रहा है उसका एक्सपेक्टेड गोल्स उसका एक्सपेक्टेड असिस्ट्स और एक्सजीआई जो होता है ना गोल्स प्लस असिस्ट का मिलान होता है एक्सपेक्टेड गोल इन्वॉल्वमेंट वो इतना हाई हो गया ना अभी क्योंकि ट्राओरे हैज पुट हिमसेल्फ इनटू सो मेनी गुड पोजीशंस वो सिर्फ भाग रहा है ऑनेस्टली हर मैच में सब एक्सपेक्टेड ही है. बट एक भी नहीं हो रहा है वो इतना एग्जैक्टली सिर्फ एक्सपेक्टेड है उससे. मैनेजर्स का डिलेमा है वो लेकिन क्योंकि अगर वो कन्वर्ट करना चालू कर देना तो एक दिन उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है 6 मिलियन में. अगर वो कन्वर्ट करना चालू कर दे तो वो प्रीमियर लीग का भी वन ऑफ द बेस्ट विंगर बन सकता है पर वो कन्वर्ट नहीं करता है. वो बहुत डेंजर है भाई. इनसे ज्यादा वुल्व्स में रुकेगा नहीं ब्रो. भाई वो इतना डेंजर है जब अपने अगेंस्ट खेल रहा था तो फ्रेड की तरफ भाग रहा था मेरे को लगा फ्रेड मर जाएगा रास्ते में. वुल्व्स का मैनेजर ब्रूनो लाग जो भी है भाई मस्त मैनेजर है यार. बहुत बढ़िया खिला रहा है बहुत बढ़िया खेल रहा है. दे आर प्लेइंग वेरी वेल. दे अनलकी थे अब तक बट बहुत अच्छा खेला. पांच जैसा रहता पता नहीं बोलना नहीं चाहिए बट हां वो डिनो मोरिया सस्ता वाला ना था. मेरे को लगा क्या इतना मैनेजर में दम बहुत है यार लेकिन सब्सटेंस भरा हुआ है उस बंदे में. तो चले यार इट वाज अ वेरी नाइस सेशन. वी कवर्ड एवरीथिंग. शुभारंभ हो चुका है रोनाल्डो का. All smiles. Viva Ronaldo. Throughout the season it goes because he had to score on the debut. ये तो होना ही था. But longevity and how he plays against other teams and कैसा सब होता है it will be very exciting to see. So yeah, that's it, man. If anything you want to guys end it with? Yeah, if anybody is listening this early, it's been our first week. If anybody is listening this early, just please make sure to support us, guys. If you don't want to like this soon, don't like it. But I would plead that please like, share and subscribe if you like the video, if you like the podcast. और हमारे socials पे follow कर लो. बाकी तो we'll try and be consistent every week. We'll come every Sunday. We'll record, we'll edit, we'll upload the videos. And yeah, lot of exciting things. कुछ अगर इधर-उधर बोल दिया होगा तुम्हारे क्लब को तो सॉरी पहले से ही. तो गाली दो हम लोग कमेंट में. आयुष को दे रहा जिसको भी गाली देना आयुष को दे. We would appreciate agar if you want us to do or cover anything which we are missing, constructive criticism we appreciate. गाली देना तो मेरे को दो यार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं सारे क्लब को सपोर्ट करूंगा बट चलेगा.